Question of the sample question paper Economics Class 12 Term 2 21-22. Question number 13. Question 13 कहता है कि पेस्टिसाइड्स जो हैं ये केमिकल कंपाउंड्स हैं designed to kill pests. Many pesticides can also pose health risk to people even if exposed to nominal quantities. और अगर आपको कम भी quantities आप ले रहे हो as a pesticide, it can bring about a lot of health risk. So, in the light of the above statement, suggest any two traditional methods for replacement of the chemical pesticides. तो आपसे दो ट्रेडिशनल मेथड्स, तो ये क्या हो गया आपका इन अ वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है ये क्वेश्चन, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें से 2 मार्क्स आर गिवन फॉर दिस. ऑलराइट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 मार्क्स. सो ऑर्गेनिक वे से वी कैन ट्रेडिशनल मेथड्स में ऑर्गेनिक मेथड से हम कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स. तो क्या है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स? तो उन्होंने 2 मांगे हैं. पहला जी है जैसे फॉर एग्जांपल नीम ट्रीज़ और उसके बाय प्रोडक्ट्स जो हैं. और ऑर्गेनिक का मतलब होता है यूजिंग अ मीन्स टू कंट्रोल पेस्ट दैट डज नॉट यूज़ मैन मेड केमिकल्स which are in the long run very harmful. So natural substances that range from say salt, vinegar, sulfur, boric acid, and all these are environment friendly and healthy. So you can write about it. Just for example, sulfur is used in rice plant. Okay, and then there are certain grass which can be grown, which is again harmful for certain insects, pests. Okay, then second is that large variety of birds should be allowed to dwell around the agricultural areas that can clear large varieties of pests including insect. तो इस तरह से जो कि हम हटा देते हैं उनको स्केकरोज लगा के वगैरह, उस तरह से आपने बर्ड्स को अलाउ करना चाहिए जो कि उस एरिया के हैं जो कि वहाँ के पेस्ट चुन के निकाल देते हैं. राइट, नाउ वी गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. 13B इज़ अराउंड फॉर कैजुअल लेबरर्स. तो यहाँ पे लिखा है इन रीसेंट टाइम्स द इंडियन इकोनॉमी हैज़ एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ कैजुअलाइजेशन of the workforce. This problem has only been aggravated by the outbreak of COVID-19. ये ज़्यादा aggravate हो गई है. तो पूछ रहे हैं कि do you agree with the given statement? Discuss any two disadvantages of casualization of the workforce in the light of the above statement. तो आपको ये देखना है, बताना है. ये जो आप देख रहे हो कि राइट्स ऑफ कैजुअल लेबर जो है इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना. सो पर्टिकुलरली, और ये जो कोविड-19 हुआ था ड्यूरिंग पैंडमिक टाइम, एज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फेल, द कैजुअल laborers were left jobless without any compensation or support. So this we could see. Remember those so many laborers returning to their rural homes without any compensation and support. So जब total lockdown हुआ था, you can write, all of you have witnessed that. And then there is no one, आप देख रहे हो कि there was no one to address their pitiable plight. They had no forum to voice their discontent. Penniless, they perished even without the COVID infection. A big disadvantage of casual labor is lack of accountability. So nobody is accountable for the casual labor. So basically you will answer it that way. Okay.
सो बस यही लिखना कि मिलियंस लॉस या जॉब्स, फिर सर्वाइवल तो आउट ऑफ क्वेश्चन था, कैसे करते हैं, और ऊपर से एडिशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर के बारे में आप लिख सकते हो कि इट एडेड टू देयर वोज देयर ट्रबल्स। और अगर ये फॉर्मल सेक्टर में होते तो भी कुछ इनका होता, दे वुड हैव बीन गिवन सम हेल्प, सम रिस्पाइट ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। और ऐसे ही बता दें कि व्हाट इज़ कैजुअल लेबर। ये जो कैजुअल लेबर क्या होता है, ये होता है कि भाई डेली वेज अर्नर्स होती हैं, एंड इतनी पॉवर्टी है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट, और इतना अनएम्प्लॉयमेंट है दैट पीपल ऑप्ट फॉर कैजुअल जॉब्स even though they have their qualifications. They become daily wage earners, like for example washing cars or selling newspapers or even being construction workers. और ऊपर से आजकल आप देख रहे हो कि पब्लिक सेक्टर जॉब्स जो हैं, there has been a fall in that due to privatization and disinvestment. तो इससे भी श्रिंक हो गया है लेबर मार्केट। और आजकल आप ये भी देख रहे हो कि समथिंग एवरी टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट जॉबलेस ग्रोथ। मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, देयर बिजनेसेस विच हैव बीन ग्रोइंग, जीडीपी में ग्रोथ भी हो रहा है, बट दिस ग्रोथ इज़ विदाउट एक्चुअली जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। सो दैट हैज़ लेड टू द स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो कैजुअल लेबर, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर बढ़ता जा रहा है। And of course agriculture, maybe there's low scope of earning, rural sector, so influx of people from the urban areas to from the rural places. और 2008 में अगर आप बात करते हो, दी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो पास हुआ था, उसमें क्या था कि ऑफ कोर्स इट वाज विद द इंटरवेंशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे भी कोई मेजर्स उन्होंने, गवर्नमेंट ने जनरेट किए थे, लेकिन टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। लेकिन इससे ये प्रॉब्लम हुई कि लोग जो बिजनेसमैन हैं वो रेगुलर, दे डोंट वांट टू अप्लॉय रेगुलर वर्कर्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉज। और फिर ये भी था कि इसमें था कि so you know, based on that we find that there is an increase in the casualization of labor, and it is still going on, and people are ready to work as casual laborers though they know what is in store for them. So with that we finished with the sample question paper of economics by CBSE. I hope you will go through it. Based on this, laterally you can think of many questions, and अभी आपने अपना pre-board exams भी दिए होंगे. So with that you will come to know how to stick to your word limit and how to answer these questions. All you need is practice, and all the very best.